Guys, welcome to the vlog. And yes, I was quite MIA because I wasn't here. मैं अपने mom के घर पे थी, so I was there just for 1 day, but somehow I stayed there at least for 3 days. Now I am back and yeah, I have taken some shots there also. थोड़ा बहुत जो हमने किया वो थोड़ा बहुत मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया था, so मैं वो आपको ज़रूर दिखाऊंगी. और गाइस हम यहाँ पे अभी लूडो खेल रहे हैं लेट नाइट. आई एम एट माय मदर्स प्लेस. 1 सेकंड. भाई तो हटा दे. अरे एक तो मिनट. यहाँ पे मेरा भाई खेल रहा है. आप चाहेंगे कि मैं आपको चले दिखाऊं वापस. भैया? नो. एक सेकंड. यहाँ पे तीनों पड़े भाई थे ये लोग बहुत चीटिंग कर रहे हैं. लिटरली मैं आप लोग को तेरी बता आगे रही हूँ. बहुत ज़्यादा कुछ आज नहीं रिकॉर्ड कर पाई हूँ, लेकिन अभी मुझे लगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम हो रहा है, इसलिए ज़रूर रिकॉर्ड करें. क्या मेरी बाल ही कट गई क्या? नहीं, गिव इट टू मी. उनके बाद मेरी आई. उसके बाद मेरी का पीछे अपना. यू वांट सैटिस्फाइड विद द बारी राइट? 3. ओके गाइस, मेरा 3 आया तो मैंने 15 को बढ़ा दिया आगे. ये बहुत ज़्यादा चीटिंग करते हैं गाइस. लास्ट टाइम भी मैं जीत गई थी, दिस टाइम देखते कौन जीतता है. गाइस इनको ये भी नहीं पता कि इनकी गोटी कौन सी है. तेरा भी 2 है. एक्सक्यूज मी, हम 2 में कट गई दीदी की. मैं मतलब मेरी क्यों अंदर करती है तू? थैंक यू वो चुका. मेरा लाल हो गई बेटा. 2 में आपकी भी गई बेटा. अरे बेटा 3 आ गई. यार ये गलत चल रहे हैं मेरे साथ. तो गाइस मैं बता देती हूँ कि ये ग्रीन वाली मेरी है, वो मेरे हस्बैंड की ब्लू, और ये येलो वाली सिस्टर की है, और ये रेड है जो कि मेरे ब्रदर की है. सो हम लोग यहाँ पे आए थे स्टे करने के लिए. मैं यहाँ पे कल रात को आई थी. हाय गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग. सो आज मैं एटलीस्ट 2 से 3 दिन के बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ बिकॉज आई वॉज एट माई मॉम्स प्लेस एंड यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इतना सारा चैन होता रहता है कि आई जस्ट कुड नॉट व्लॉग. सो आज मैं वापस घर जा रही हूँ. सो आई थॉट कि मुझे ये व्लॉग स्टार्ट कर लेना चाहिए बिकॉज आई वॉन्ट टू बी कंसिस्टेंट. आई वॉन्ट टू अपलोड एटलीस्ट, मतलब हर 1 दिन 2 दिन में मैं अपलोड कर लूँ, मैंने ये सोचा है. तो ये मैंने नया सूट बनवाया है अपना बिकॉज व्हेन आई केम हियर ना, सो अब मैं ढंग से तैयार होकर नहीं आई थी क्योंकि मैं जल्दी में थोड़ा सा निकल गई थी. एंड माई मदर लिटरली ऑल दिस वाइल शी वॉज स्कोल्डिंग मी एंड आई जस्ट डिडंट लाइक इट. शी गॉट माई आईब्राउज डन, शी गॉट दिस स्टिच्ड फॉर मी एंड एवरीथिंग. So now I am here all decked up nicely and I'm also liking it because it was actually needed, but I wasn't getting the time, or you can say not I wasn't being able to do anything about the situation. And I also thought that as my husband's birthday is almost here, so I should definitely get these things done because you may never know when the lockdown can happen or anything can happen anytime. So we are not sure about anything. Life is uncertain and so is the future and things happening at the moment. So you may never predict anything. So yeah. So अभी मैंने ये vlog start कर दिया है. My husband is on his way to take me home. But अभी हम लोग जाएंगे नहीं because it is so hot outside. टेम्परेचर इज़ टू हाई. तो हम लोग अभी थोड़ा सा चिल करेंगे. मेरी ही वॉज ऑल्सो हियर, लाइक जिस दिन हम रात को आए थे ही वॉज हियर एंड देन अगले दिन फिर वो घर वापस गए थे. उसके बाद फिर उस दिन वापस आए वो रात को, फिर रुके, फिर कल वो घर चले गए थे रात को. एंड नाउ ही इज़ कमिंग बैक अगैन because my mother wanted him to be here and she wanted me to go with him only. So here is my sister. She is getting ready. She's doing something, making her hairdo or whatever. This was gifted by me, this dress, and all You can see there are suits that came at my wedding as gifts from the family and friends and guests. My husband is on his way, so mama is cooking something, I believe she's doing something. So yeah, let's stay tuned. वो अगला मैं से सीढ़ी भी अरेंज करके रहा. 2 फ्लोर के साथ
बार ऐसा है ना, एक फोन पे आ गया। पिछली बार भी आया था सना तुम तुम्हारे हमारे टाइम पे आया था ना, और मेरे को ये जहर लेकर ही आता है हर बार। कल की तो दिखा फोटो। कुछ मत बनाओ भाई, गर्मी हो रहा है, सिर्फ पानी पीऊंगा, पानी वाला साथ। चावल ही बना ले, खा के तो आया था मम्मी में लंच के। लंच भी कर लिया? अरे लंच टाइप का ब्रेकफास्ट कराने के सीधा वो भारी सा इतना बड़ा सैंडविच बना के कितना मोटा चिकन मटन। इतना बड़ा से So guys, we just sitting like this only. बट अभी मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लिया है. एंड द अदर डे आई वाज वाचिंग अ व्लॉग ऑफ अ व्लॉगर, लाइफस्टाइल व्लॉगिंग करती है वो. सो समटाइम्स शी इज़ डूइंग हॉल्स दिस एंड दैट. आई एम नॉट गोना टेक एनी नेम्स. सो मैं उसका व्लॉग देख रही थी एंड शी सेड कि मैं जो व्लॉग करती हूँ वो मैं प्लान करके नहीं करती हूँ, मैं जो कर रही होती हूँ वो दिखा देती हूँ. और व्लॉग एक ऐसा चीज़ होती है जो कि आप बहुत अच्छे से यू नो लाइक आप प्लान नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो. जो एक्चुअल में हो रहा है वो ही दिखाते हो, दिस एंड दैट. एंड शी ऑल्सो सेड दैट ब्लॉगिंग एक जगह बैठ के नहीं होती है. And I feel somehow disconnected with this thing. I disagree with it completely. क्योंकि for me a video is something where I can relate to certain things. A video is something where I can see or hear certain things which actually seems relatable and practical. So vlogging, अब लॉकडाउन अगर है और यह हो जाता है और फर्दर पूरे तरीके से, so you won't be able to go outside, and at that point of time what you will be doing is just sitting at home and recording whatever you do. So as per me, vlogging is something where I can feel relatable with a creator, and that is all about it. If I talk about a channel where it has around 52 to 53 lakh subscribers, I won't take name again, but I like his vlogs of course. But he's also not showing a lot of things nowadays since last year's lockdown. He's just showing whatever he does at home with all the members that he has. So that's how it is, right? Once people start feeling relatable and connected, then you can show whatever you want. It's not like you cannot show you cannot make vlogs just by sitting at one place. That's not how it goes, I believe. You just need to be relatable, and you know, you have to show something which can go well with the viewers and which can make you feel more connected, or which can make them feel more connected to you. That's how it is. Yeah, so that was my take on that statement. Now I have applied this Nivea cream, which I absolutely love, because I started breaking out after marriage. I had little black spots here and there. I don't know why, but डजेंट मैटर मैं कौन से पार्लर जा रही हूँ, डजेंट मैटर मैं किस मेकअप आर्टिस्ट से करवा रही हूँ अपना मेकअप. whenever I get my makeup done from some other artist, I always get some sort of skin problems. That's how it is. So like fortunately I got this and I started using it, and I'm quite happy with it now. So I have applied it, and this top is from Sarojini Nagar, which is like for 200 bucks only. I don't know why, but I just got this for me. So yeah, now as it's been around more than 2 minutes since I have applied this cream, so I'm gonna move further because I need to go to the market with my mill. So I am again using the Maybelline Fit Me foundation, mixing it with Estee Lauder Double Wear Stay in Place makeup. Some vloggers also says that you know, with this current situation, people are not really into makeup and all that stuff, but not everyone is like, you know, similar. So some people are still in it, they still want to see more of it.
some you can say are not really bothered about makeup and all that stuff. Sorry, I forgot to show you that I'm mixing these two foundations. I'm putting my MAC concealer also. My very favorite Innisfree pencil, eyebrow pencil. Okay, taking my MAC Studio Fix to settle or set my base a little bit. Please comment down below and tell me how are my lenses looking, because I really like this color, and I would show you how it literally enhances the whole look. I'm not a very big concealer fan, but I just like how it uplifts the whole look and gives you a cleaner canvas for your eyes. You can see eyeshadow applies really well after you apply a concealer. Now it's time to apply some eyeshadow. So I'm just thinking which eyeshadow I should apply. Taking this brush which I had bought from Miniso. Taking this shade right here. This is Pumpkin Pie eyeshadow palette by ELF. Okay, I'm just trying to make it a little less messy. Now taking the other shade and just applying it like that. That's it. Not applying too much because it's daytime. Putting the remaining here. Taking the Nykaa foundation stick in coffee chisel or toffee chisel. I don't know, but this is the darkest shade that Nykaa has. Don't ask me why am I putting it like that, because even I have learned all these things.
Putting my Smashbox kajal. So done with the liner also. It's time to put the lipstick on, and then I will put some mascara also. Please don't mind the lips. Just putting some powder here and there. Okay, we've forgot to put blush. Applying the Super Cosmetics brush today. I think we should not let anything break us emotionally or mentally in this situation, in this pandemic or whatever you call it. We should definitely try to boost our confidence and everything, and makeup literally helps. Whenever you're feeling low, just try to put on some makeup and you would feel better instantly. So I think you should always try this therapy, because I have tried this out a couple of times and it literally helps. It boosts the confidence which you are lacking at this point of time. You would feel far better after applying makeup. It literally looks nice. So I don't have a lip liner, that's why I am putting Chai by Nykaa again. Using it to line my lips. I am applying this by Nykaa, which is Mona Lisa. I'm just trying whether it looks nice or not. Oh, it's looking nice, because I didn't want to put Maybelline Fighter again. Okay, I've been using that lipstick quite a lot of times in my videos, but I forgot to tell. It is Fighter by Maybelline, which is an absolute gorgeous shade. It is in the range Super Stay Matte Ink. It is from that range, in case you want to buy. Because I never like believing in the concept of not applying makeup just because you are at home. That doesn't make sense, because in today's times we all are at home, almost every one of us. So if you would feel that अरे यार we are just at home, क्या मेकअप करना, तो मेकअप एक्सपायर हो जाएगा, which I literally don't want. ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये गालों पे भी बहुत अच्छी लगती है.
ये मुझे बहुत पसंद है एज अ ब्लश ऑल्सो, एंड आई whenever I'm not applying too much of makeup ना, I really like applying this only with some lipstick and that's it. I'm good to go. I hope the light is not exaggerating my makeup. I don't know why, but my makeup is acting strange today. Okay, now I'm putting this MAC Fix Plus on. Alright, so now I'm done with my makeup and I'll still see you after some time. So, stay tuned. Okay, so we are at Reliance. So I have got some goodie. उधर we are just waiting for my husband to come and take this saman. We are waiting for him. Nobody's here. It's too hot outside. Yeah, it's too hot outside. With this mask on, it is even more suffocating. My god, it is so suffocating. I just hate how people watches you when you are doing something like this. They are like, oh my god, what the hell is happening? So husband is back here. He's here to get all the saman. So ये तो बात सही है, दुकान भी खुलेगा कि नहीं खुलेगा, दूध तो चाहिए। एक 2 लीटर दूध लेनी और एक ब्रेड लेना, आधी ब्रेड तो थोड़ा होगा। ब्रेड भी सही रहती है, काम आ जाती है। तो मैंने इतना कुछ बोल दिया और मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया कि मेरी जो सेटिंग है वो टाइम लैप्स पे थी और मैं चबड़ बोल रही हूँ और उतनी ही तेज़ वो चबड़ आ रहा था। तो बेसिकली अभी हम लोग लंच करेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड यू आल्सो हैव योर लंच। बाय बाय। I'm having some ice cream which my Miru has bought for me, and this is so good actually, you know. I just love it. And I love वो वाली आइसक्रीम जो आती थी मटका कुल्फी, I don't know, जो कि 4 काटते थे बीच से, that was the best. So I'm enjoying it. मेरी मम्मी ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। राइट गाइस, तो मैं खाना पीने खा के एकदम फ्री हो चुकी हूँ और अभी रेस्ट नहीं करूँगी। आई एम जस्ट थिंकिंग, जो सब देख रहे हो ना पूरा फेस पे जो इतना ज़्यादा वाइट लगा हुआ चिम वो इसकी वजह से हुआ है। और सच में दिखा दिया इसने कि 200 रुपये का टॉप है, पूरे घर में इसने ऐसे चिम कर दिया है। मैं इसे थोड़ी देर में भी चेंज करने वाली हूँ। दैट्स इट। So husband is sleeping and I am having this mishti doi because I was craving for something sweet, and it generally happens to me like after having my meals I usually feel that I need
something sweet, like not too much. If somebody wants to share that, they can definitely share whether they like Mishti Doi or not. I used to hate it, but now I am in love with it. Yeah, this happens. Like I used to hate honey, but now I can tolerate it. For पहले तो I couldn't even tolerate it in my mouth, but अभी I have it whenever it's required. So yeah, that is the update. Alright people, so I am making some parathas, and here we have made some करेला. तो अभी मैं पराठे बना रही हूँ, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे, तो मैं आपसे मिलती हूँ, राइट? Alright people, so we are done with our dinner and everything, and we can call it a day now. But I have to share something with you guys. Please don't buy this sort of inexpensive cheap material which is blingy, क्योंकि वो पूरा का पूरा इधर उधर अगर आपको दिखाई दे रहा है, I don't know whether you can see or not, पूरा का पूरा पूरे घर में पूरा चमक हो गया है. मेरे फेस पे भी इवन इफ़ यू कैन सी पूरे पे चमकी सी है वो लग गई है. सो या दैट इज़ इट फॉर द डे टुडे. और मैं आप लोग को मिलती हूँ कल. अब देखते हैं कल हमारा कैसा होता है वीकेंड लॉकडाउन. हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, एक्साइटिंग होता है, कुछ काम हो पाएगा, प्रोडक्टिव होता है, या फिर टोटली फेल रहेगा और हम लोग बोर होंगे. जस्ट सी हम क्या करते हैं. So till then, take care, good night, and just share the video if you like it, subscribe to the channel, and thank you so much for watching. Bye bye.